अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टोबैको द साइलेंट किलर। आज हम टोबैको के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से एक साइलेंट किलर है, किस तरह से नुकसानदेह है। सब्जेक्ट है इंग्लिश। टोबैको Tobacco is a common name applied to plants of the nightshade family that are cultivated for their leaves. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crop grown in the world. एक कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है जो आजकल दुनिया में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। Tobacco plants grow 1 to 3 meter, that is 3 to 10 feet, and produce 10 to 20 leaves. 10 to 20 leaves इसमें निकलते हैं एक टोबैको प्लांट में। These leaves are dried, processed, and used to produce cigarettes, cigars, and chewing tobacco. 3 तरह के इसके फार्मर्स हैं। एक है सिगरेट्स, और सिगार्स है, एंड च्यूइंग टोबैको। यानी पान वगैरह जो आम लोग खाते हैं। It is said that Christopher Columbus in 1492 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस on landing on the island of Tobago found the native using tobacco leaves for pleasure. Since then, the habit of smoking has spread out to different cultures all over the world, and smoking has become a big industry at the cost of health. क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जजीरे टोबैगो पे गया और वहाँ पे उसने लोगों को देखा इन लीव्स को इस्तेमाल करते हुए फॉर प्लेजर। इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मस्ती के लिए। और तब से ये आदत जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है। और टोबैको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। इस टोबैको से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ सेहत का नुकसान है। 2 तरह से नुकसान है, एक तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं, दूसरा इससे सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है, सेहत भी खराब हो जाती है। Tobacco smoke contains 400 chemicals. 43 of them are carcinogenic. And carcinogenic substances are those substances which cause cancer. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, and oxides of nitrogen. Carbon monoxide, which binds to hemoglobin and reduce its oxygen carrying capacity, is also present in it. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, जैसे हमें मालूम है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। The major component, however, is nicotine. लेकिन सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है tobacco में, that is nicotine, which has harmful effects on the nervous system. In humans, it is highly addictive and causes an increased heart rate and high blood pressure.
However, there are some uses of tobacco, कुछ इसके यूज भी है. Nicotine obtained from the plant is widely used in agriculture as an insecticide. कीड़े मार दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. Refined tobacco seed oil can be used as a substitute for groundnut oil as it contains no nicotine. It can also be used in oil plant and varnish industries. Tobacco was used in the past in as a medicine, as a sedative, and for treatment of gastrointestinal disorders. Nicotine is also a valuable constituent of many vitamin preparations. Then there are its disadvantages. इसके कौन कौन से नुकसान आते हैं? Tobacco is a silent killer. Lung cancer is caused by the tar in tobacco. जो इसमें टोबैको में मौजूद होता है, इससे लंग कैंसर हो जाता है. People who smoke are 10 times more likely to die from lung cancer than non-smokers. The mixture of nicotine and carbon monoxide in each cigarette smoke temporarily increase heart rate and blood pressure, which strains the heart and blood vessels. These can cause a heart attack and stroke. It slows the blood flow, cutting off oxygen to feet and hands. Some smokers end up having their limbs amputated. Carbon monoxide decreases the oxygen supply to the muscles and brain, making these organs stressed. Cigarette smoking during pregnancy increases the risk of low birth weight and even premature babies. Even passive smokers inhaling some smoke of proximity to a smoker also run the risk of developing many diseases in comparison to active smokers. People who smoke run a high risk of cancer. In Kashmir, people consume tobacco by inhaling some smoke from the hookah, which is in the native language is called a jajir. कश्मीर में लोग पीते हैं उसको, आम जबान में लोकल लैंग्वेज में इसको जजीर बोलते हैं. उसी के ज़रिए से ये टोबैको पीते हैं. And that was all about tobacco, the silent killer. Thank you.